Hello guys, in this video we will learn the accounting of GST. So first of all you should know the meaning and types of GST. There are basically two types of GST. First is the GST levied by central government and second one is the GST imposed by state government. एक जीएसटी होता है जो सेंट्रल चार्ज करती है और दूसरा जीएसटी क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट्स चार्ज करती हैं। इस कंसेप्ट को हमने समझना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, जीएसटी चार्ज करेगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी अकाउंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज़ CGST and second one is SGST. IGST क्या होता है? IGST stands for Integrated Goods and Services Tax. इसमें वो सारे टैक्सेस कवर हो जाएंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज होंगे और जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं जाएंगे। सारे का सारा जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाएगा। सेकंड है CGST, SGST. CGST stands for Central Goods and Service Tax. SGST stands for State Goods and Services Tax. जो टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसका वन हाफ 50% पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाएगा और जो उसका बाकी हाफ है, ठीक है, 50%, वो स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। क्लियर? एंड नाउ फॉर अकाउंटिंग पर्पस वी शुड नो द वेयर टू चार्ज IGST एंड वेयर टू इम्पोज CGST, SGST. देयर आर टू कंसेप्ट. फर्स्ट इज इंटर स्टेट ट्रेड एंड सेकेंड इज इंट्रा स्टेट ट्रेड. इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रेड होता है जो ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हरियाणा स्टेट का पंजाब स्टेट में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है तो वो उस पर हम चार्ज करेंगे IGST बिकॉज ट्रेड अकर्स बिटवीन टू स्टेट्स. एंड इंट्रा स्टेट क्या होता है? वो ट्रेड जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन स्टेट, जो एक स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर होता है। ठीक है, जैसे होशियारपुर वालों ने कुछ लुधियाना वालों से परचेज़ कर लिया। ठीक है, लुधियाना की जगह हमने कुछ पटियाला से परचेज़ कर लिया, वो सारा क्या हो गया? एक विद इन स्टेट. जो विद इन स्टेट ट्रेड होगा वो होगा इंट्रा स्टेट, और जो बिटवीन टू स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स होगा वो होगा इंटर स्टेट. एंड फॉर इंटर स्टेट वी चार्ज IGST एंड फॉर इंट्रा स्टेट वी यूजली impose CGST and SGST. Clear? We have to pay GST at the time of purchase and similarly we have to collect GST at the time of sale. At the time of purchase we open these accounts for passing journal entries. First is input CGST, input SGST. These accounts we generally use for intra-state purchase. Intra-state purchase. And input IGST is used for inter-state purchase. Clear? One thing to set in mind that GST paid is an asset. GST paid is an asset, not an expense, because it can be set off against GST collected on sales. जो हमने GST सेल्स पे कलेक्ट करेंगे, GST की जो भी पेड होगा उसको हम कलेक्टेड वाले में से सेट ऑफ करके फिर गवर्नमेंट को फाइनल पेमेंट करेंगे। इसलिए जो GST हम पे करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारे लिए एसेट है जिसका हमें कोई फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली
we collect GST at the time of sales, and for sales we use output CGST, output SGST. For intrastate sales and output IGST for interstate sales. Clear? GST, as the GST paid is an asset, so GST collected is our liability, as we have to deposit the surplus GST with the government. जो भी हमने GST कलेक्ट किया होता है, ठीक है, वो सारे का सारा हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना होता है. अगर किसी तरीके का भी हमने कोई परचेज़ करी हुई अपने बिजनेस के लिए, उस पर जो भी GST पे किया होगा उसको हम सेट ऑफ करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है. क्लियर? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट प्रैक्टिकली, आई एम टेकिंग numerical examples. Here it is. Pass necessary journal entries assuming CGST 5%, SGST 5% and transactions are occurred within Delhi. Within Delhi. ठीक है, ये सारे का सारा क्या हो गया? Within Delhi, मतलब सिंगल स्टेट में होगा, within one state. So we use only CGST SGST account and ignore IGST. Vijay bought goods for ₹50,000 on credit. Mr. Vijay, a person who purchased goods for 50,000 on credit. ठीक है, उसने क्रेडिट पे परचेज किया है. अगर कोई भी पर्सन क्रेडिट पे परचेज करता है तो हम जनरली एंट्री कर डालते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. If name is not given, so we will use creditors account. And we have bought goods for 50,000, so we will record 50,000 as the in the purchase account. Along with purchases, we have to pay GST, so we will use input CGST, input SGST. These three accounts will be debited, and creditors account will be credited. Clear? And we have to impose 5% CGST as well as 5% SGST, and we apply this percentage on the costing of goods, that is 50,000, 5%, and the total of these three will be posted to creditors account. It will be 55,000. Clear? Now move on to next transaction, that is he sold some goods for ₹67,500 in same state on credit. Now he made some sales, and for sales we use debtor account. If the sales were made on credit, so we use debtor account. Debtors are assets, so these will be debited to sales account. Sales account we use for the sales made. The sale price of the goods was ₹67,500, and same will be credited in sales account. And at the time of sales we use output CGST, output SGST account. Both these accounts will be credited with 5%, and it will be 3375, and total of these three amounts will be debited to debtors account, and it will be 74,250. Clear? He paid for railway transport.
अब उसने कोई ना कोई सर्विस ली है रेलवे ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन इज सर्विस एंड GST विल ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज. सो we will pass journal entry railway transport, or we use transport charges account. Transport charges account debit, and we have to pay GST along with service charges. So we will use input CGST, input SGST to cash. Here the word paid is mentioned, so we will treat as we have made the payment in cash. So we use cash account. Railway transport or transport charges will be debited with 4,000. 5% of the same will be debited to CGST, SGST account, and the total of these three will be credited to cash account. He bought computer printer for rupees 5,000. Now he had purchased office equipment for 5,000. So we will pass journal entry computer account, input CGST account, input SGST account to cash account. Nothing is mentioned, so we will treat as cash purchase of computer. Computer is our fixed asset, so we will separately open the account of a computer, or we can use office equipment account. 5% of 5,000 will be debited to CGST, SGST account, and total of these three account will be posted to cash account. Clear? Now at the last, we have to set off GST paid from GST collected, and the balance will be deposited in government treasury. Clear? For that purpose, here you can see we have debited input CGST, SGST, GST account, and for setting off these accounts we will credit these accounts, and here we have credited output CGST, SGST account, and for setting purpose we have to debit output CGST, SGST account. So entry will be output CGST account, debit output SGST account, debit to input CGST, to input SGST, to electronic GST ledger account. As we have to pay, as we have to deposit the balance to government by electronic payment, so we will use electronic GST ledger account. Clear? And now you can see we have only one entry for output CGST, and we will debit the same 3375, and we have number of entries for input CGST, SGST. We have to get the total of input CGST, SGST for crediting or setting off a purpose, and total of input CGST account is 2,950, and same for input CGST, SGST account 2,950, and difference between the debit and credit is 850, and same will be deposited to government by electronic GST ledger account. Clear? Now move on to next case where IGST account is also bring into use. Here it is. Pass necessary journal entries assuming CGST 9%, SGST 9%, and IGST 18%. Mr. A, who is registered in Haryana, purchased goods for rupees 2,50,000 in Haryana. Now you can see Mr. A had purchased goods from Haryana, or we can say purchased within state. So we will use input CGST, SGST account. Clear? So we will pass journal entry for purchases account, input CGST account, input SGST account,
to nothing is mentioned purchase made on cash or credit, so we will use cash account. To cash account, cash account will be credited. Clear? The value of the goods, costing of goods 2,50,000, same will be debited to purchase account. 9% of 2,50,000, that is 22,500, debited to input CGST, same debited to input SGST, and total of these three accounts will be posted to cash account, that is 2,95,000. Clear? He sold them to Mr. B of Mumbai for rupees 3 lakh in cash. Now he had made cash sales, so we will pass the entry. ही सोल्ड गुड्स इन मुंबई. ठीक है, अब उसने सेल कहाँ पे करी है? मुंबई में. मुंबई क्या हो गई? महाराष्ट्र स्टेट. सो वी यूज़ आउटपुट CGS आउटपुट IGST आउटपुट IGST अकाउंट एज सेल्स मेड इंटर स्टेट और विद अनदर स्टेट. अब उसने सेल क्या करी है? किसी दूसरी स्टेट में. सो वी विल यूज़ आउटपुट IGST account. Here the entry will be cash account to sales account to output IGST account. We will credit rupees 3 lakh in cash sales account. 18% of 3 lakh, that is 54,000, credited to output IGST account, and total of these two accounts posted to cash account, that is 3,54,000. He paid for railway freight. Railway freight is service charges, so we will use railway freight account debit, input CGST, input SGST, to cash account. Railway freight charges were rupees 3,000. 9% of 3,000 to 270. Total of these three accounts will be posted to cash account. He bought computer printer for rupees 10,000. Computer account debit, input CGST, input SGST to cash account. Computer worth rupees 10,000, 9%, 900, and total of these will be posted to cash account. Last we have to set off GST collected from GST paid. For that purpose we have to debit the output IGST account, so we will debit output IGST account. Output IGST account will be debited to input CGST, to input SGST, to electronic GST cash ledger account. Clear? Input IGST 54,000 and total of input CGST is rupees 23,670, and same for input SGST. Difference between debit and credit will be 660. Clear? Now move on to last case of this topic, that is GST paid is reversed. जो GST हमने पे किया होता है उसको हम रिवर्स कब करते हैं? फर्स्ट केस इज गुड्स लॉस्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स रिटर्न ऑफ, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, फ्री सैम्पल्स, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, और गुड्स रिटर्नड बाय कस्टमर, और व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू क्रेडिटर. जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं, जहाँ गुड्स हमें रिटर्न आती हैं, उस केस में भी हम GST को क्या करते हैं? रिवर्स. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ
रिवर्सिंग जीएसटी को रिवर्स करने का मेन पर्पज़ क्या है? अगर कोई भी गुड्स हमारी डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या गुड्स हमें रिटर्न आ गई, या हमने रिटर्न कर दी, तो उसके लिए जो भी हमारा जीएसटी का बेनिफिट होता है, या जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो वो तो अगर हो ही नहीं सकती। अगर हमारे पास गुड्स ही नहीं है तो हमें वो लाइबिलिटी भी हम क्यों सफ़र करेंगे, ठीक है ना। तो उस केस के लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रोविज़न मिलती है कि हम जीएसटी को रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर? टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली the cases of GST reverse, I am taking one numerical example, that is goods costing rupees 10,000 lost by fire. When goods lost by fire, we use goods lost by fire account, goods lost by fire account, debit to purchases account, as our stock is reducing or our stock has been lost, so we will create the purchase account, as well as we will create input CGST, input SGST account. इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। कॉस्टिंग ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, assuming 5% CGST SGST, so 5% CGST, 5% SGST posted to input CGST SGST account. Total of these three posted to goods lost by fire account. Clear? Goods costing 5,000 taken for personal use. Now proprietor has withdrawn goods for personal use, so we will use drawing account, credit same accounts, purchase account, input CGST account, input SGST account. 5,000 will be posted to purchases account, 5% of the same posted to CGST SGST, and total will be posted to drawings account. Goods costing 1,000 returned to creditors. Now we have returned goods to creditors, so creditors account will be debited, creditors account will be debited to purchase return account, as we have returned the goods, purchase return account, to input CGST, to input SGST account. Cost of goods will be posted to good purchase return account, 5% of same posted to CGST SGST, and total will be posted to creditors account. Goods costing 2,000 were returned by customer. Our customer has returned goods to us. किसी कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न करी हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, goods are coming back, so sales return account will be debited. At the time of sales, we have credited output CGST account. Now we will debit the same output CGST, output SGST to debtors account, or we can use customer account. Sales return will be debited with 2,000, 5% of same will be posted to CGST SGST, and total will be posted to debtors account. Clear? That's it with the GST topic. Thank you.